जी नमस्कार, मैं अश्विनी अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर डायरेक्ट टू पब्लिक में। जैसा कि आप जानते हैं पिछला वीडियो हमारा था गुरुवायूरप्पन टेम्पल के ऊपर और गुरुवायूरप्पन टेम्पल में जब मैं गया तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दी जो कि आम दिखती हैं लेकिन उसके पीछे बहुत से रहस्य छुपे हैं। जब आप भी मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं और आ जाते हैं बट लेकिन वहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल मंदिरों में हमें दिखती हैं पर हम उनसे प्रश्न नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है ये आम बात है। लेकिन उन आम बातों के पीछे क्या रहस्य छुपे हैं वो आज हम कोशिश करते हैं जानने की शाहजी कृष्णन जी से। तो आइए चलते हैं आज के सेकंड पार्ट गुरुवायूरप्पन टेम्पल ब्रैम्पटन में। हमने बहुत कुछ जाना इस टेम्पल के बारे में, अभी भी बहुत सारे प्रश्न दिमाग में घूम रहे हैं। कृष्णा जी मुझे एक बात बताएं, जैसे हम ये तो मेरी अपनी सोच है या मैंने जो भी शेयर किया कि हम प्रीस्ट स्नान करके आते हैं और हम प्रीस्ट को टच नहीं करते, प्रीस्ट हमें टच नहीं करते, उससे पवित्रता बनी रहती है। तो इसके अलावा क्या कोई और भी रीज़न है आपको लगता है इतिहास में, कोई अपने सनातन धर्म के इतिहास में कोई ऐसा रीज़न रहा हो कि हम प्रीस्ट को टच नहीं करते और प्रीस्ट को हम जो भी चीज़ देनी होती है हम चौखट पे रख देते हैं और प्रीस्ट अंदर ले जाता है? तो डू यू थिंक देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस जो हमें नहीं पता, हम जो नए अब आ रहे हैं सनातन धर्म में हमें नहीं जानते नहीं उस बारे में, कुछ बताएं इसके बारे में? Because there is multiple different types of temples, and this particular temple is very unique in the sense that when you come inside the temple on a quiet day, it's very quiet, so you don't hear much sounds, the ringing of the bells or microphones or even the people, right? And there is some sort of quietness in the temple, and that quietness comes with its own vibration, because every time the puja is being done, it's being chanted. And the way it functions, if you see the sopanam, right? The sopanam Siddhya. Okay. So this is sopan kehte hain hum usko. Okay. So behind the sopanam, only the priests go. And the priests are those people who are specialized in initiating the prana pratishtha and channelizing the energy. Okay. So these are the people who are exclusive, usko vrit lete hain wo sab. So they do those kind of activities. And what they do is they do it with mantram, yantram and tantram. Okay. So the tantram hota hai, that's from very unique to South India, especially from Kerala. And the text that governs the tantram is the Tantra Samuchayam and also. It's a huge text. So they follow those kind of scriptures, and according to the scriptures, they do mantra chanting, and there will be some yantras in forms of various pujas, and they also do a lot of mudras. Okay. Tantric mudras and all the stuff. So what they do is they energize the whole idol or the murti or the vigraha. Okay. So when they do it, all they want to do is they try to channelize the energy. They don't want to touch anything outside by which their bioenergy can get dissipated. Oh. So that is one of the reasons they are not touching people or that stuff. So there's a real reason behind that. तो अभी जैसे आपने बताया हमें सीढ़ियों के बारे में, what are these stones? These are different. Like these are like this is entirely different thing. What is this? These stones are called Ashtadigbalagas. So that's a very beautiful question. So when you look at these kind of stones, you find these stones in all 8 different cardinal directions. North में होता है, south में होता है, east, west, northeast, northwest, north, southeast, southwest. And these are all the guardian angels or the guardian deities, which comes as part of the Bhagavan. So Vishnu ke liye na, you have Indra, you have Yama, you have Kuber, then you have Ishana, you have Agni Dev, Varun Dev. So all the deities are all around it. So these are the symbols of that deity. They are the symbols of like the on deities. these things the deities are there. जो मंदिर होता है, मंदिर के टॉप पे जो एक कलश होता है, I think. yeah. कलश कहते हैं इसको. Kalash Am I कहते right? हैं, yeah. So what is the importance of this kalash and what about this kalash? Oh, the kalasham. In certain mandirs, you have one kalasham, or if you have a huge temple, you have multiple kalashams. Or in Tamil, usko कहते हैं kumbam. When you Kumbhabhishekam too. So you have all the new kumbhams, they put the abhishekam on it, it's a Kumbhabhishekam कहते हैं. Okay. So there's a beautiful scientific reason behind it. So what happened is there's 2 main reasons, because when you look at it, they're all made up of a particular element of copper metal. Okay. So it's an alloy made up of primarily of copper. It's a good conductor of electricity. So basically it acts as a lightning conductor. Okay. But more than that, when you look at all the kumbhams, when you try to open the 3 layers of each kumbham, here you have one main kumbham, but in certain temples you have multiple kumbhams. Yes. So if you look at all the kumbhams, and when you open the kumbhams are all air sealed, and inside the kumbham you will find grains, navadanyam. Oh. And the reason, you know why? Because back in South India had lot of multiple tsunamis.
When each tsunami comes, the salt water from the ocean will come and wipe out the entire fields. जो खेती बाड़ी सब होता है ना, सब नष्ट हो जाता है. Or whatever grains they have saved for the next year to germinate and grow, they're all soaked in salt water. Yeah. It will never germinate. So क्या करेंगे वो? So उस वक्त क्या उसने कहा कि नवधान्यम होता है ना, 9 different types of grains. All the germinating grains, the top quality of the grains are stored. They're put in these kind of copper vessels, sealed airtight, and they're welded. Or sometimes back then there was no welding. They used to call it ashtabandhan. So they used to use 8 chemicals around and make it airtight. And they put all those grains on top of the mandir because mandir happened to be the largest structure in that area. Yeah. Mandir ka shikhar hota hai, it's very high. सबसे ऊंचा होता है शहर के अंदर. So what happens is when even the tsunami comes, this will not be touched. So after the tsunami, when everybody goes, when they clean up the fields and when they want to germinate it, they will go back to the kalasham, take those old navadhanyams, which are very good, and they try to sow and recultivate. Spread in their fields so that it more fertile the land. Correct. Because all the grains are gone and there's no way you can खेती बाड़ी कर नहीं सकेंगे आप. Because it's all vanished. Yes. There you go. So they take this one and they do it. And they also realize that all these grains has got a 12-year life expectancy. 12 saal. So after 12 years, the germinating potency of the grains goes down. Okay. So what did they do? They said, let's have a kumbhabhishekam every 12 years. Every time you do a kumbhabhishekam, take the old kumbha, throw away the grains back to the ground, put new grains, seal it, have it. Wow. So think about the logic and the scientific rationale. हमारे सनातन में देखिए कितना कुछ छुपा है अपने गांव को, शहर को बचाने के लिए, उसको आबाद रखने के लिए, कि कलश को जो हम 10 साल बाद, 12 साल बाद जो कुंभ मेला करते हैं उसके अंदर चेंज किया जाता है इस मंदिर के कलश को, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अब उस लायक नहीं है कि जिससे फर्टाइल किया जा सके लैंड को, तो दोबारा एक नई मिट्टी, नया सब कुछ उसमें डाला जाता है. और जब कोई ऐसी आपदा आती है जिसमें सुनामी या कुछ भी, जो पूरे जब नमक वाला पानी सारे आपके खेतों को वैनिश कर देता है, तो उसके बाद यहीं से वो मिट्टी लेकर और उसको दोबारा स्प्रेड करके फील्ड्स के ऊपर दोबारा से खेती की उम्मीद होती है. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइक मंदिरों के साथ समाज का ख्याल रखना, इसको हम कह सकते हैं कि समाज का ख्याल रखा जाता है और एक धार्मिक तरीका है अपने समाज को, अपने शहर को, अपने गांव को या अपने खेतों को बचाने का. बहुत प्यारी चीज़ है. मुझे भी आज पहली बार ये पता लगी चीज़ कि इस तरह का कलश होता है और जानने में बहुत अच्छा लगा. तो माइट भी आप में से काफ़ी लोगों को पता हो या जिनको भी आज पता लगा हो, तो मेरे ख्याल से लर्निंग की बहुत अच्छी चीज़ है. क्योंकि विष्णु जी के भी वो हैं, सप्तऋषि हैं, शेषनाग जी हैं. शेषनाग जी हैं. तो आई कैन सी लॉट ऑफ स्नेक्स ऑन द कॉर्नर. सो this is because of Sheshnag or what? No, it's basically more like a Kundalini energy and a Tantra. Okay. I can't say too much of it, but I'll say it in a gist. Can you please tell us? Yeah, sure. Basically, what happens in the temple is your body, your mind, and intellect. They all three come together. So you can fully concentrate, you can channelize the energy from your Mooladharam all the way to Sahasraram, and then you can pray to God. So basically what happens is, like, you know, the main door is closed, and when the main door is open, you see the Lord. There won't be much lights, there will only be a few diyas, and on the diyas you see the prasanna vadanam of the Lord. And when you look at the Lord in that way, what happens is, like, your 5 senses, your eyes, your ears, your nose, your tongue, and your touch, everything is in unison. So when you control all the 5 senses, and when you try to bring your mind together, your body, your mind and intellect come together, and the ahankaram is gone. Then you realize what the supreme truth is. Wow. The basic philosophy of our Sanatana Dharma or Vedantic philosophy that comes into your mind. So that is one of the reasons, Ashwani ji, when you do a puja, you offer the Lord the same thing. See, these are the 5 things I represent. Dhoop hai, smell ke liye, chandan hai, then you have for your sparsham, then you have pushpam hai for the space, the air, and also the diya. So all the 5 senses, you're giving it back to the Lord, saying, thank you, Ji, for doing everything for us. Let my mind be united. Let me have noble thoughts. And let me be able to channelize my energy and understand my true self.
So that is the ideology of this mandir. And that is one of the reasons that since it's a prana pratishta, people are not allowed to take any photographs or any video recording of the inside Lord. Directly to the idol. Directly to. This is amazing. Like बहुत कुछ है कृष्णा जी आपसे सीखने को, सुनने को. मुझे लगता है कि इस दिन एक बड़ा लंबा पॉडकास्ट करना पड़ेगा कृष्णा जी के साथ बैठ के, सनातन को समझने के लिए, मंदिर को समझने के लिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को समझने के लिए. अमेजिंग नॉलेज. आज हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, बहुत कुछ जाना है इनसे. और आइए अब थोड़ा थोड़ा और, ये आपके यहाँ पे लगे हुए हैं तराजू. Like what is this? Like what is मंदिर के अंदर तराजू किस लिए? Like तुलाभारम कहते हैं. तुलाभारम, yes. Yeah. So तुलाभारम is sort of you are offering to the Lord, saying that Bhagavan, if you pray for something and if it materializes, it could be anything or material or any spiritual progress you have in your mind. You say it. So people go and sit on one side and whatever they pray for. So it could be shakar, it could be sugar, it could be any fruits or any vegetables which the temple may use. Equivalent to the weight of the Equivalent to the person. weight you offer to the Lord. Wow. So what happens is like that particular stuff goes back to the temple and it gets communicated or distributed to all the devotees as part of Annadan. Wow, that's beautiful. कोई भगवान से कहता है कि भगवान अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं आपको अपने वजन के बराबर, अपने भार के बराबर आपको ये चीज़ मैं प्रसाद के रूप में देना चाहूँगा. तो जैसे अगर मैं एक तुला पे बैठ जाऊं और दूसरी तुला पे मैं फ्रूट्स रख सकता हूं, अन्न रख सकता हूं, शक्कर, आटा, कुछ भी जो भी मैं दान करना चाहता हूं वो मैं अपनी, जैसे सवा मणि होती है कई मंदिरों में, सवा मन दान दिया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे अपने भार के हिसाब से आप दान कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा पूर्ति होती है उसके लिए. बहुत सुंदर बात है. ये मैंने पहली बार किसी मंदिर में देखा है. मतलब नॉर्थ इंडिया में इन मंदिरों में नहीं होता. बड़ी मैंने केरला में भी शायद नहीं देखा था या मेरा ध्यान नहीं गया, बट यहाँ पर ये और बहुत सुंदर सी चीज़ है. बहुत अच्छा है कि एक तरफ आप बैठते हैं और एक तरफ जो आप प्रसाद यहाँ पर दान करना चाहते हैं वो प्रसाद आपने यहाँ रखा हुआ है. दिस इज़ ब्यूटीफुल. तो कृष्णा जी वो जगह जो है आपकी जो एक स्टेज बना हुआ है, दैट इज़ फॉर व्हाट प्रोग्राम्स डू यू डू देयर? Oh, that particular stage, we have lots of cultural programs happening. Okay. And sometimes what typically happens is like, when you have a satsang or a bhajan, people come and use it. And similarly, people also use it for any programs where they have, especially when arangetram or something, when the dance recital hota hai na, rent pravesh hota hai na ji, dance ke liye. Yes. So uske liye the people, they can come back and rent it. And it's named after Poondanam arts. Poondanam एक बहुत बढ़िया एक कवि भी था और एक भक्त भी था, कृष्ण भक्त भी था. Okay. So Poondanam ji, whenever we have another podcast, I'll talk about Poondanam ji to you. It's a different Sure. story. I don't want to steal the moment. Yeah. So it's named after Poondanam ji. So that's a. And after this stage, there is a little kitchen. I think that's that's Shyam Rasoi, Krishna Rasoi. हाँ जी. तो वहाँ पर भगवान की भोग सब ना बनाते हैं हम. भगवान के भोग में आप लोग क्या यूजुअली भोग में क्या बनाते हैं किचन के अंदर? कोई एवरीथिंग इज राइस बेस्ड, चावल बेस्ड है. अच्छा. समटाइम्स यू हैव खीर भी होता है ना. खीर हो गया, चावल. तो चावल को सर्व सिर्फ चावल ही करते हैं, कुछ और साथ में? भगवान के लिए चावल तो अलग है. So they cook it separately and they take it to the prasad, and sometimes you have 3 times per puja, and for all 3 times you need to have a different prasad for the Lord. So they serve it, and once after the puja they come back and serve it with all the public. We do that, and sometimes there are certain days where you have Udayastamana puja. So from morning till evening, from Udayam to Astamanam. Wow. From dawn to dusk. So during these days there will be multiple pujas. It will be more than 3. So depending upon the sequence of the pujas and the style of pujas, multiple prasad will all be cooked. They will all be cooked in the temple and they will all be served to the Lord. Wow. And remember I was talking to you about the Ashtadigbalagas. Yes, we can see the Panditji performing puja. वहाँ पर भी पूजा हो रही है. Yes. Oh yeah. So this is what he does every 3 times in a day. He comes and offers it, and the moment he offers that puja, people will come and clean it so that people don't step on it and also don't step on the prasad too. तो अभी ये जो टेंपल बंद है इस समय, right? He's going to open it right now. अच्छा. So if you come here, I'll show you. जो मंदिर में पंडित जी जाते हैं तो लाइक क्या घंटी वगैरह नहीं होती अपने मंदिर में यहाँ पे बजाने वाली, बड़ा वाला जो घंटा होता है? नहीं, बड़ा वाला घंटी तो नहीं है जी, छोटा वाला है. हाँ. छोटा वाला जब बजाते हैं ना, जब पंडित जी अंदर जा सकते हैं तो भगवान से परमिशन लेने के लिए कि मैं आप सुबह आ रहा हूँ, सुबह की पूजा करने के लिए, दोपहर आ रहा हूँ, दोपहर की पूजा करने के लिए, शाम को आ रहा हूँ, शाम की पूजा करने के लिए, और भोग लेकर आ रहा हूँ. It's like a knocking door that I am outside and I am coming in now. I'm coming inside. May I have the permission to come inside? So the Pandit ji prasad सब लेकर आ रहे हैं,
So then घंटी बजाते हैं, फिर अंदर जाता है. ओके. So that's what it is. And since we want to keep the decibel level quiet, and since you want to keep the same vibrations in the temple, you don't hear much other noises, which could be distractive for some. That's true. बहुत बढ़िया बात है जी. देखिए, आप अगर मंदिर को ध्यान से देखें, मंदिर के द्वार के ऊपर एक घंटी है. तो जब भी पंडित जी भोग तैयार करके सुबह दोपहर शाम को जब भी भोग लगाने भगवान को जाते हैं, तो पहले घंटी बजाते हैं, जस्ट लाइक अ नॉकिंग द डोर, कि भी मैं प्रभु आ गया हूँ और मैं आपका भोग लाया हूँ, मुझे परमिशन दें कि मैं अंदर आ सकूँ और आपको भोग करा सकूँ. तो वो परमिशन लेके अंदर जाते हैं, अंदर जाकर भोग करवाते हैं. और ऐसे ही ये बेल सिर्फ उसी समय में यूज़ होती है, और नॉर्मली सार्वजनिक रूप से ये बेल यूज़ नहीं होती. तो बहुत अच्छी बात है. और जो बेल है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे लोगों को, जो क्योंकि यहाँ पर लोग आके आत्मचिंतन भी करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बेल लोगों को उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, तो इसलिए यहाँ पर बेल नहीं है इस टेम्पल के अंदर. बहुत बढ़िया बात है. कुछ नई चीज़ें हमने इस टेम्पल में आज देखी हैं, जो मैंने भी बहुत सीखी हैं, और मेरे को लगता है आप लोग भी शायद सीख पाएंगे और सीखा होगा आप लोगों ने. सो आइए कुछ और आगे चलते हैं. शाम रसोई के बारे में मैंने आपको बताया था. यहाँ पर शाम रसोई कृष्ण रसोई है, जहाँ पर बाबा का भगवान का भोग बनता है, और उसी भोग को पंडित जी ऑफ़र करते हैं भगवान को. और यहाँ पर जो भगवान का स्वरूप है उसके हम डायरेक्ट फ़ोटो तो नहीं ले सकते, लेकिन येस उसके कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले के हैं. और इसके अंदर चतुर्भुज में आपको नारायण रूप के दर्शन मिलते हैं, कृष्ण रूप के दर्शन मिलते हैं, जो चतुर्भुज में हैं. और यही दर्शन आज हम करने यहाँ पे आए हैं गुरुवायूरप्पन टेम्पल के अंदर. और गुरुवायूरप्पन टेम्पल आप समझ गए, गुरु बृहस्पति भगवान, वायु पवन भगवान, और अपन एक महोदय जिसको हम आदर के रूप में जिसको सम्मान देते हैं. तो गुरुवायूरप्पन टेम्पल इसका नाम है. बहुत सुंदर नाम है. और सेम मंदिर जो साउथ इंडिया में है, केरला में है, उसी का एक स्वरूप है. ये बहुत सुंदर स्वरूप है, और इसी में पूरी कोशिश की गई है कि जो वातावरण वहाँ पर मंदिर का है, वही वातावरण मंदिर का यहाँ पर भी कायम रखा जाए. सो आइए कुछ और थोड़ी सी झलकियाँ लेते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के कार्यक्रम के लिए. कृष्णा जी, अभी जैसे हमने बहुत सारी पूजा वगैरह के बारे में बात की, जो प्रोग्राम चलते रहते हैं, आज भी पूजा हो रही है टेम्पल के अंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये. इस पूजा के बारे में कुछ बताएं आप. Oh, this puja is very unique. So क्या होता है ना, in Hindu dharma there is 16 samskaras. Short से samskaras कहते हैं हम उसको. उसमें है एक तो है अन्नप्राशन. So what happens in an annapranam is when a little baby is born, for the first 4 months or so, the baby only drinks the milk of the mother. Okay. The baby does not feed anything that's grown in the mother earth, Dharti. So the first grain the baby has is a rice. Yes. And what they do here in South India is, the Annapranam, they bring it to the baby to the temple. Till then, the baby is considered equivalent to God, because it's not eating anything that's been cultivated in the Mother Earth. Yes. So the first morsel of food the baby ever has is a rice. So when they come to the temple, the dad and mom, they make the baby sit on their lap, and they tell the Bhagwan, "Thank you, Bhagwan, for giving me a healthy child. And this is the first time I'm going to feed the child with something that's grown on the earth." Okay. So I'm going to give it to you in your presence as a prasad from you. So the Panditji brings a boat, and he brings the tirtham and all the stuff. He gives it to the mom and dad. The mom and dad gives the tirtham to the little baby, and they start feeding the baby with the first morsel of rice. Wow. When they also do that, they also give them the baby the taste of all the different tastes. Navarasas कहते हैं ना खाने में भी. So sometimes salt, shakkar, salt. So they put a little bit of each, and that's the first time the baby is tasting the food. So यानी कि 4 महीने के बाद, अभी तक तो बच्चा जो था माँ के दूध ही पी रहा था, तो अब 4 महीने के बाद पहली बार कोई भी जो धरती पे पैदा हुआ अन्न है या फ्रूट है, वो पहली बार चख रहा है अलग अलग टेस्ट में, जिसके अंदर थोड़ी शुगर भी होगी, नमक भी होगा, और तो हर तरह का टेस्ट उसको चटाया जा रहा है या खिलाया जा रहा है. इमली का टेस्ट भी होगा ना. इमली का टेस्ट भी होगा. वाह. खट्टा मीठा और खारा सब कुछ होगा. Because life is made up of that, right? So you have pleasant ones or unpleasant ones. और फर्स्ट टाइम वो जो ये मंदिर में आके करता है. मंदिर में. जैसे नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी शायद होता है, बाल कटते हैं, जड़ूला कहते हैं, मुंडन होता है. तो उसी तरीके से पहली प्रथा है कि पहला जो यहाँ पर जो भोजन है, भगवान के चरणों में भगवान के प्रसाद स्वरूप वो भोजन अपना ग्रहण कर रहा है. हर तरह का टेस्ट है, खट्टा मीठा खारा. ब्यूटीफुल.
तो ये पूजा मैंने पहली बार देखी है लाइफ के अंदर। ये पूजा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी कि 4 महीने का जब बच्चा हो गया और जब पहली बार उसको कुछ भी टेस्ट कराना है तो मंदिर में बिठाकर उसे भगवान से प्राप्त प्रसाद में खट्टा मीठा खारा हर तरह का टेस्ट उसको खिलाया जा रहा है, चखाया जा रहा है, और माँ बाप दोनों अपने प्यार से अपनी लैप में लेकर अपने बच्चे को वो टेस्ट चखा रहे हैं प्रसाद रूप में। तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही इमोशनल, मतलब एक बहुत ही फीलिंग वाला दृश्य है ये, और मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं देख के। बड़ा इसीलिए क्यूरियोसिटी कि मैं आपसे पूछूं कि है क्या, और वाकई इसका तो मतलब भी बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, थैंक यू सो मच। And you can see the grandparents sitting behind them. Or sometimes grandparents come, कभी-कभी godfather, godmother भी आते हैं उसके बाद. Okay. Then they also is you're giving them with annam. That's the nourishment, the strength. The पहला वाला, the first morsel annam है ना. So वेदों में कहते हैं ना. This is awesome. This is amazing. Beautiful. So कृष्णा जी, हम बात कर रहे थे, जैसे हमने वहाँ पे देखा मंदिर में भगवान के आगे ये पैडी रखी हुई थी, तो इसके बारे में बताएं कि मतलब जो भगवान के स्वरूप के बिल्कुल सामने पैडी रखी हुई है उसका क्या रीजन है, लाइक क्या आस्था है उसके पीछे, क्या what is the logic behind keeping this in front of God? Yeah. So आप देख रहे हैं ना, ये पैडी है. हाँ जी. So once you remove the husk, Yes. उसके चावल है इसके अंदर. There is rice. Rice inside. Okay. So what happens is, like most of South India, it was mostly like an agricultural place, right? Just like agrarian community, just like North India. So what happens is, like every year, soon after the harvest, so they have lots of this kind of paddy coming back. So what people do is, whenever they have this kind of paddy coming back, this is called para. Okay. So this is a hollow cylindrical structure, and this is used as a measurement tool. So how many paras of rice did my kid, or I got it from a field? This is a measure for that. Okay. So in this para, what they typically do is, the first grain or the first harvest, they take it, they fill it in the presence of Lord, and they give it to the temple. Okay. Back in Kerala or in Tamil Nadu, it's very common, and they call it as a parayadappa. Sometimes it comes in a hathi. The Bhagwan Murti comes in a Harti, they come to the house, and the elephant, you have the Bhagwan there, and the first harvest, you fill it in this kind of structures, and the husband and the wife, they fill the para with the paddy, and they offer that as a prasad or a thanksgiving to the temple. And what the temple does it, they use it for their Annadanam and all the stuff. So this is how people, most of the agrarian people in South India, they used to do it. So this was more like a thanksgiving for us. So we are saying to the Lord, you gave us a bounty harvest this year, and so thanks Bhagwan, I'm giving back to you. तो इसको कहें कि जो भी साल की फसल होती है, उस फसल का जो पहला ये आपका ये जो क्या बास्केट कहेंगे, इस तरह की बास्केट भरकर वो भगवान को ऑफर करते हैं और थैंक्स करते हैं कि आपकी कृपा से हमारा घर चल रहा है, हमारा अन्न अच्छा हो रहा है और हम फल फूल रहे हैं. सच. ब्यूटीफुल. So you can see भगवान का मूर्ति भी है ना, लॉर्ड कृष्णा की, वही है. So दिया जब जलाते हैं, so ऐसा होगा. Once you have everything, they put it in a mat. So you have the basket full of paddy. You put the first paddy, and you allow it to overflow, saying that I did receive sumptuous blessing from you. This is awesome. Thank you so much for giving us all the bountiful gifts. And basically, I think I saw these lot of these are here. So what you use in? So basically, what we do in here in the temple is, just before the utsav, we go to devotees' houses, and we allow the devotees to fill these paras and give it back to the temple. Wow. So they all feel a sense of feeling, a community interconnectedness together. So अभी मैंने देखा इनके मंदिर में ना, ये बहुत सारे ये एक पैमाना है, एक माप करने का तरीका है. एक जैसे हमारे पीपा होता है, एक ड्रम होता है, एक ड्रम है ये सिलेंड्रिकल, और इसके अंदर ये भर देते हैं अन्न को. तो इनके पास बहुत सारे रखे हुए पीछे मैंने देखे. तो मेरा प्रश्न यही था कि भाई चलो भगवान के आगे रखने के लिए तो दिखाने के लिए तो एक एक बहुत है, बट आपने इतने तो इन्होंने बताया कि जब फेस्टिवल आता है, टाइम आता है, तो इस तरह के सारे लेकर लोगों के घर घर जाते हैं और वहाँ से इस तरह का अन्न इकट्ठा कर कर मंदिर के लिए लेकर आते हैं और लोग इसको थैंक्स गिविंग के रूप में उनको देते हैं. और बहुत ही सुंदर सेलिब्रेशन है. ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण. आज आपके साथ बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ जाना हमने. मैं हैरान हूँ कि मैं इतना लेट क्यों हुआ यहाँ आने पर. मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था, बट चलो जैसी ही भगवान कृष्णा की मर्जी, तो पर हम आज आए और इट्स आर रियली प्लेजर कि आज हम यहाँ पर आए, आपसे मिलना हुआ और आपसे इतना जानने को मिला. वी आर रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
तो आज का डायरेक्ट टू पब्लिक यही हम समाप्त करते हैं। और आज इतनी सुंदर जगह है ये कि अगर आप यदि ब्रैम्पटन में आ रहे हैं, अगर आप किसी भी आध्यात्मिक जगह पे आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से गुरुवायूरप्पन टेम्पल, जो कि टॉरवेम और कंट्री साइड के इंटरसेक्शन पर है, ब्रैम्पटन में है, कनाडा में है। तो अगर आप कनाडा कभी भी आते हैं, नाइग्रा फॉल घूमते हैं यहाँ पे और मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो यहाँ पर भी मंदिर में ज़रूर आकर दर्शन करें। यहाँ पर बहुत ही प्यारा इतिहास है, यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्राण प्रतिष्ठा है, यहाँ बहुत ही प्यारी आस्था है। बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आकर आप, आपका परिवार एक अच्छे दर्शन कर सकते हैं चतुर्भुज विष्णु भगवान के या चतुर्भुज कृष्णा जी के। सो आज का डायरेक्ट टू पब्लिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी अगले हफ्ते। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।